Okay students, now here is the question number 2 from exercise 4.1. Question number 2 का हम first part कर रहे हैं, that is the area of the rectangular plot is 528 meter square. हमें area दिया गया है, right? तो सबसे पहले हम given लिख लेते हैं. Area is equal to 528 meter square, which is given to us. Right? Now, the length of the plot is 1 more than twice of its breadth. अब length कितनी है हमारी? एक ज्यादा twice breadth से. So सबसे पहले हम breadth को find out करेंगे. Let's breadth B is equal to x. हमने breadth find out कर ली. अब length हमें क्या है? Length हमें क्या बताई गई है? That is 1 more than twice of its breadth. Twice मतलब 2x हो जाएगा. Twice of its breadth. Breadth का दुगना. और breadth हमारे पास क्या है? x है. तो twice क्या हो जाएगा? 2x plus 1. Right? Now हमारे पास length है, हमारे पास breadth है. Right? Area भी हमारे पास given है. तो हम equation find out कर सकते हैं. So what is the area of rectangular? Area is equal to length into breadth. Area कितना है हमारा? 528. What is the length? 2x plus 1. Right? It should be in brackets क्योंकि ये multiply होगा. And breadth हमारे पास क्या है? x है. Right? So 528 is equal to, अब x जब 2x से multiply होगा, so it will becomes 2x square plus x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे it will becomes x. Now अब ये जो 528 पॉजिटिव में है, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा it will becomes negative. So our equation will becomes like this: 2x square plus x minus 528. So this will be our answer. So how we will write? We will write that hence, it is the required equation.